Hello, my sweethearts. Welcome back to my channel. That's me, Riaz. Eshaan. Hope he will be okay. Today I have brought special and unique lesson which is all about past habits. That how to show past habits and English. So guys, don't skip this video because if you are a new learner or if you are really eager to learn something about English grammar, so believe me, this video definitely will help you more and more in English grammar because I'm teaching you basic things and basic rules about grammar, English grammar. So that's why definitely it will help you, okay? So let's get started. सो ऐसे लगातार कामें जो हम माजी में करते थे उनके लिए हम इंग्लिश में यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ टू अंग्रेज़ी फिक्रों में यूज़ टू का इस्तेमाल गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम को लगातार करने यानी हैबिचुअल एक्शन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात याद रखें, ऐसे जुमलों में फाइल के बाद यूज़ टू और इसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब मतलब फ़ेल, एक्शन, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रोज़ाना क्लिनिक जाया करता था। सो इसका इंग्लिश है इस तरह, आई यूज़ टू गो टू क्लिनिक डेली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ टू और इसके बाद हमने वर्ब के पहले फॉर्म लगाया है। दूसरा मिसाल है, मैं हॉकी खेला करता था। आई यूज़ टू प्ले हॉकी। आई यूज़ टू प्ले हॉकी। वो मेरे साथ पढ़ा करता था। He used to study with me. He used to study with me. Negative sentences, नफी जुमले। वो हॉकी नहीं खेला करता था। He did not used to play hockey. He did not used to play hockey. वो अंग्रेज़ी नहीं बोला करता था। He did not used to speak English. He did not used to speak English. वो मेरे साथ नहीं पढ़ा करता था। He did not used to study with me. Interrogative sentences, इस्तिफ़हामिया जुमले। क्या मैं रोज़ाना क्लिनिक जाया करता था? Did I used to go to clinic daily? Did I used to go to clinic daily? क्या अहमद अंग्रेज़ी बोला करता था? Did Ahmad used to speak English? Did Ahmad used to speak English? So guys, it was all about today's video. In next video I will talk about present habits that how to show present habits in English, okay. I hope you have learned and you have enjoyed my video. If you enjoyed my video, so please drop like and comments because your one like encourages me more. So until next video, goodbye.